इट्स जुलाई राइट नाउ. सो अगर आपसे कोई पूछे कि Q1 में व्हाट वाज इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट, सो इट वाज अबाउट 6-7%, राइट. नाउ डोंट टेल मी कि मोदी जी ने नंबर्स फर्स्ट किए हैं, बट सेम क्वेश्चन इफ समवन आस्क्स यू अबाउट स्टॉक मार्केट, इंडिया में जितनी कंपनीज लिस्टेड हैं उनका सेल्स ग्रोथ क्या था, यू माइट नॉट हैव एन आंसर. उनका प्रॉफिट ग्रोथ क्या था, यू माइट नॉट हैव एन आंसर. आपके पास ये आंसर होगा कि टीसीएस कितने परसेंट से ग्रो किया, बट आईटी कितने परसेंट से ग्रो किया. यू माइट हैव एन आंसर कि अडानी सीमेंट्स इतने परसेंट से ग्रो किया, बट सीमेंट्स कितने परसेंट से ग्रो किया. सो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव बिल्ट अर्निंग्स ट्रैकर. ओके, नाउ यू सी दिस स्क्रीन. अर्निंग्स ट्रैकर में what we present is, this is the universe of all the companies. By the way, Q1 FY27 जिसमें हम हैं अभी, sales growth for the 225 declared companies is amazing. 20% sales growth है and profit growth is modest. 5% का ही profit growth है. So that also tells you the state of our economy कि कितना Q1 earning season कैसा रहा है so far. So I'll give you a walkthrough of कि ये how to use the earnings tracker. So from here you can select कि आपका यूनिवर्स क्या होगा. You want to see निफ्टी टोटल मार्केट जहाँ पे 750 कंपनीज होते हैं, और you want to see let's say BSE 500, और you want to see निफ्टी 50, everything you can see. यहाँ से you can select the quarters जिसके लिए आपको ये सारा अर्निंग्स का डेटा देखना है. डिक्लेयर्ड इज कि आउट ऑफ ऑल द कंपनीज कितने कंपनी ने अपना अर्निंग्स डिक्लेयर कर दिया है. बीट एस्टिमेट्स इज नंबर ऑफ कंपनीज जिन्होंने जितना कहा था कि इतना अर्निंग्स हम करेंगे उससे भी ज्यादा किया. मिस्ड एस्टिमेट्स इज कंपनीज जिनका एनालिस्ट ने जो भी प्रेडिक्ट किया था कि इतना ये अर्निंग्स करेंगे उसको मिस किया. एंड नो एनालिस्ट कवरेज इज बेसिकली कंपनीज जिनका कोई कवरेज नहीं है. टिपिकली छोटी मोटी कंपनीज होती है, उतनी बड़ी कंपनी नहीं होती है. नाउ हियर यू विल सी, लेट्स से पीपल विल जस्ट टेल यू कि अरे फाइनेंस बहुत अच्छा चल रहा है, कैपिटल मार्केट्स बहुत अच्छा चल रहा है, और आईटी सॉफ्टवेयर इज वीक. बट हाउ मच वीक, राइट? सो यहाँ पे यू कैन क्लिक, यू कैन सी दिस आईटी सॉफ्टवेयर, राइट? 5 कंपनी they have beaten estimates, 6 companies they have missed estimates, 12 का अभी रिजल्ट्स पेंडिंग है. एंड यू कैन ऑल्सो सी कि सेल्स ग्रोथ क्या है, कि आईटी सॉफ्टवेयर, आईटी वीक हो गया, वीक हो गया, वीक हो गया, कितना वीक हो गया. सेल्स ईयर ऑन ईयर इज स्टिल ग्रोइंग, प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर इज स्टिल ग्रोइंग, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ इज वेरी मॉडेस्ट, 3% का ही ग्रोथ है. इफ यू क्लिक ऑन इट, then you will see the detailed earnings report of all these companies. TCS, Infosys, HCL Tech, इन सब ने अपना अर्निंग्स डिक्लेयर कर दिया है. देयर आर अ फ्यू पेंडिंग कंपनीज जिनका भी रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं हुआ. एंड दिस इज ईपीएस सरप्राइज कि कितना एक्सपेक्टेड था एंड कैसा उनका परफॉर्मेंस रहा. नाउ यू कैन, देयर आर व्हाट हंड्रेड्स ऑफ सेक्टर्स हियर. यू कैन सी आईटी सर्विसेज का कैसा रहा है, बेवरेजेस का कैसा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कैसा है, एंटरटेनमेंट कैसा है. यू कैन प्रीटी मच सी एवरीथिंग कि सबका रिजल्ट सीजन कैसा रहा है. नाउ इफ यू गो टू अपकमिंग सेक्शन, यहाँ पे आपको दिखेगा कि किन किन कंपनीज का अर्निंग्स अभी आना बाकी है. इन द लाइव फीड यू विल सी ऑल द लाइव रिपोर्टिंग्स बाय दीज कंपनीज. इन द डिक्लेयर्ड सेक्शन यू विल सी सारी कंपनीज जिनका रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुका है. इफ यू क्लिक ऑन लेट्स से एआई समरी हियर, और इफ यू क्लिक ऑन लेट्स से व्यू रिपोर्ट ऑफ कैनरा बैंक, तो यू विल सी इनका जो प्रेजेंटेशन था वो आपको प्रेजेंटेशन दिखेगा. इफ यू जस्ट वांट टू समराइज इट, इफ यू डोंट हैव टाइम टू रीड इट, you can click on this AI summary button, and finally जो Q1 FY27 का presentation था Canara Bank का, you will get the summary of it. If you don't have time to read the entire presentation of Canara Bank, so you can just read the summary, right? And you will see कि ये सारे numbers ये presentation से ही आए हैं. कहाँ पे if you click on it, तो you'll also get to see कि किस page number से ये presentation आया है, right? Now you can also compare, like people can tell you कि Q1 अच्छा है, Q4 उतना अच्छा नहीं था, Q3 अच्छा नहीं था. So let's say Q1 का sales growth is 19.7%. Let's go to FY26 and check for Q4. Okay, Q4 का sales growth इतना अच्छा नहीं था, it was 9.6% only, but PAT growth was very good, 31% PAT growth था, right? Now this very interesting thing, that is leaderboard. लीडरबोर्ड में यू विल सी कि कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा सरप्राइज किया है इन अ पॉजिटिव वे. लाइक सफायर फूड्स, उनका ईपीएस सरप्राइज 256%. दीज आर ऑल द कंपनीज जिन्होंने बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स दिया है एक्सपेक्टेशन से. यू कैन ऑल्सो सी कि सेल्स ग्रोथ किनका सबसे ज्यादा हुआ है. यू कैन ऑल्सो सी लाइक इटर्नल विच इज जोमैटो, उनका सेल्स 182% से ग्रो किया है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस एंटायर अर्निंग्स ट्रैकर इज, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन पूरे यूनिवर्स में कि निफ्टी में क्या हो रहा है, निफ्टी 50 में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल्स में क्या हो रहा है, सीमेंट्स में, इफ यू आर जस्ट इंटरेस्टेड इन योर ओन वॉच लिस्ट, इन योर ओन पोर्टफोलियो, देन यू कैन क्लिक ऑन वॉच लिस्ट हियर, राइट? एंड यू विल सी
कि आपके वॉच लिस्ट के कंपनीज या फिर आपके, इफ यू क्लिक ऑन पोर्टफोलियो देन यू विल सी रिजल्ट्स ऑफ ओनली दोज कंपनीज जिनका जो आपके पोर्टफोलियो में है. सो यू सी मेरे पोर्टफोलियो में 27 कंपनीज है, बाय द वे दिस इज अ डेमो पोर्टफोलियो. So sales growth is 24%, PAT growth is -9%, which is obviously not a very good thing. Although अभी 19 और कंपनीज है जिनका रिजल्ट आना बाकी है. 2 ने एस्टिमेट्स को बीट किया है, 1 ने मिस किया है, 5 का कोई कवरेज नहीं. एंड यू विल सी, आई कैन सी कि किस किस सेक्टर में आई एम इन्वेस्टेड एंड उस सेक्टर का में जो भी मेरी कंपनीज है उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, राइट. सेम यू कैन गो टू वॉच लिस्ट एंड you can see all these things. So it's like having your own personal earnings tracker. So I'll add the link to this earnings tracker in the description. It's super useful. It's also one of the most visited section of our website. Like people use it almost on a daily basis जैसे ही earning season start होता है. So you can also start using it.